Everybody please settle down. Thank you. All the students are requested to please have a seat and maintain the decorum. All are requested again to please switch off your mobiles and no recordings are allowed. नास्ति विद्या समो बंधु, नास्ति विद्या समः सुहृद, नास्ति विद्या समम वित्तम, नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा बंधु नहीं है, विद्या जैसा कोई मित्र नहीं है, विद्या के जैसा कोई सुख नहीं है और विद्या के जैसा कोई धन नहीं है। A very warm welcome to the August gathering. On behalf of Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, Department of Law, I, Lishima Sehgal, and I, Anchita Jain, heartily welcome you all to the valedictory ceremony of this prestigious 7-day mega event of MAIMS 4th Justice J.S. Verma Memorial National ADR and Client Counseling Competition and Navata's National Law Fest 2024. We are honored today to have amongst us distinguished dignitaries on the dais. Honorable Mr. Justice Pankaj Mithal, Judge Supreme Court of India, our chief guest. Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India, our guest of honor. We are also honored to have amongst us Ms. Shubhra Verma ma'am to grace the occasion with her benign presence. Our founder and chief advisor, Dr. Nand Kishore Garg, our chairman mates, Sri Vineet Kumar Lohia, our director madam, Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, our general secretary mates, Sri T.R. Garg sir, entire management, head of all departments, faculty members, participants, students, all the legal enthusiasts, and all our collaborators present here today, without whose unwavering support we wouldn't have come so far. Continuing the esteemed legacy of our former Chief Justice of India, Justice J.S. Verma, we consider it an honor to have organized this competition for the 4th consecutive year in his honor. It is commonly held that one's journey through life is steered by two essential elements, academic powers and divine blessings. The recitation of Saraswati Vandana serves to dispel any obstacle that might obstruct one's path to success. Saraswati Vandana symbolizes the pure flow of wisdom, knowledge, consciousness, enlightenment, and divine knowledge, the essence of the Vedas. In recognition of this profound significance,
we cordially invite all the dignitaries to partake in the ceremonial lighting of the lamp as we invoke the presence and blessings of Goddess Ma Saraswati. And we also request the dignitaries to please pay tribute to our martyrs on Shahidi Divas. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। We hope that the divine aura of Ma Saraswati has filled the atmosphere with positive energy. And we sincerely believe that the blessings of Ma Saraswati has bestowed their grace upon our event, and we anticipate a successful conclusion as a result. आज इस सभा में जहां हम शहीदों को नमन करने के लिए एकत्रित और एकजुट हुए हैं, ऐसे में कुछ पंक्तियां हमारे जहन में भी आती हैं। कभी नहीं संघर्ष से इतिहास हमारा हारा, शहीद हुए वो वीर जवान, उनको नमन हमारा। इन्हीं कुछ खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम शहीदी दिवस पर शहीदों को नमन करते हुए हमारी कल्चरल समिति से आग्रह करते हैं कि वह आकर हम सबकी ओर से शहीदों को अपनी प्रस्तुति पेश करें।
छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ। आजा सांझ हुई, मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई। देख मेरी नजर आ जाना। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। वो वो ए गुजरने वाली हवा, बता मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। आजा आजा जिंदगी शामी आने के तले, आजा सारे मारे नीले आसमानों के तले। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
Matram. It was indeed an outstanding performance by our student committee of Swarag, the Music Society. Ladies and gentlemen, before we proceed with the festivities, it is essential to pause and express our heartfelt appreciation to our esteemed dignitaries for honoring us with their presence. We would request the founder chairman and chief advisor mates, Dr. Nandkishore Garg sir, to kindly felicitate Chief Guest Honorable Mr. Justice Pankaj Mithal as a token of our gratitude. Thank you, sir. We would now request the chairman mates, Shri Vineet Kumar Lohia, sir, to kindly felicitate our guest of honor, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, as a token of our gratitude. Thank you so much, sir. Now we would request Shri S.P. Goyal, Vice Chairman mates, to kindly felicitate Shubhra Verma ma'am as a token of our gratitude. Thank you. Our law is not just an abstract concept. It is the embodiment of human experiences and aspirations. As we further advance into this morning, we would like to introduce the strong pillar of MAIMS, our Director Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra, under whose able leadership MAIMS has been accredited by NAC A++ grade. Ma'am is a true inspiration for all of us. And we are honored to request ma'am to deliver a welcome address to the august gathering. Please, ma'am. Discourage litigation. Pursued your neighbors to compromise whenever you can. As a peacemaker, the lawyer has superior opportunity to being a good man. A very good morning to Honorable Mr. Justice Pankaj Mithal, Chief Guest of the Day, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Guest of Honor, Honorable Dr. Nandkishore Garg ji, Founder Chairman and Chief Advisor, Maharaja Agrasen Technical Education Society, and Chancellor, Maharaja Agrasen University, Baddi, under whose able guidance, NAC A++ has been obtained by MAIMS. Very warm good morning to Shri Vineet Kumar Lohia ji, Chairman MAIMS, Shri T.R. Garg,
General Secretary MAIMS, Ms. Shubhra Verma, daughter of Justice J.S. Verma, all other revered members of the Trust, distinguished guests sitting off the dais, dear participants, and my dear students. The presence of distinguished legal luminaries, magnificent personalities who are radiating the knowledge and inspiring the young generation of budding advocates has made this morning a more enriching to all of us. Both of our guests are institutions in themselves, and their tremendous work and knowledge has written new chapter in the legal arena, and we wholeheartedly salute both of you for your dedication, commitment, and great knowledge. The journey of learning will be incomplete without the guidance of learned people like Honorable Mr. Justice Pankaj Mithal and Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, who readily accepted our invitation despite the very busy schedule. Lordships, it itself speaks volumes about your dedication towards students in particular and society in general. I am indebted to both of you for accepting our invitation. Dear students, alternate dispute resolution as a concept is deeply rooted into Indian ethos and can be described as a tool of social justice in the Indian context. Such a party-friendly mechanism ultimately upholds the rule of law by providing an incentive for parties to utilize their autonomy to the fullest to arrive at a just and equitable outcome. Mahabharata is an example of early attempt at mediation as a conflict resolution tool, where Lord Krishna attempted to mediate the dispute between Pandavas and Kauravas. And we all know, and it is hereby worthwhile to mention, that failure of mediation resulted in disastrous consequences. Sir, with huge pendency of litigated disputes in India, it is imperative that legal institution promotes ADR practices for dispute resolution and thus inculcates skills in students to expertise them. Realizing this obligation, Department of Law, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies, through this 7 days event, seeks to cater a platform that will acclimatize law students to alternative mechanism of dispute settlement and thus train them to become successful professionals ahead. Department of Law began its journey in the year 2017 under the able guidance of great visionary Dr. Nand Kishore Garg, founder, chair and vice chancellor, Maharaja Agrasen University, Baddi. And since then, all faculty members have been working hard to deliver quality legal education and shape young budding advocate, as these young minds will play an instrumental role to bring change in society. Changes in the modern India is the need of the time. Changes brought by the government in the field of law and education will definitely play a pivotal role in shaping the future of Bharat. These logical, creative, and constructive young minds will definitely be the torch bearer and witness the Viksit Bharat. Moving towards the event organized by MAIMS, competitions like mediation, negotiation, client counseling, extempore moot court are providing the platform to young minds to delve into a given problem and to settle the dispute in a logical manner. Agyo api tanjatha meti shane shailo api churnate bano apyati mahalakshyam pashye abhyas vijrambitam. Meaning, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति भी धीरे धीरे निरंतर ज्ञानी बन जाता है, पहाड़ चूर्ण हो जाते हैं और तीर सूक्ष्म निशाने पर अचूक लग जाता है. So we should do the practice on a regular basis to become a successful professional. So my dear students, in the events like this, no one can lose anything because it may happen
that you will not be able to get trophy, but definitely you are taking with you immense knowledge, confidence, and various soft skills that are essential to become successful professionals. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for such a warm welcome. When you put your heart into your goals, success is within your reach. Leading the charge are our program heads of the 4th edition of this Law Fest, Prableen Kaur and Smridhi Saral. Join them as they unveil the exciting journey of the 7-day mega event of MAIMS 4th Justice J.S. Verma, National Memorial ADRCC and Navitas National Law Fest 2024. Nelson Mandela once said, and I quote, "It all seems impossible until it's done." And that was exactly our vision at the initiation of this flagship event of our Department of Law, MAIMS, which was commenced on 11th of March, and here we are today at its final conclusion day. Each day for the past 4 months has been a roller coaster ride, and we couldn't be more elated to have that proud feeling of picking off new milestones from our list each day. The shape in which this event is today is purely the vision, hard work, and dedication of our brilliant 75 student coordinators, 21 faculty coordinators, and 50 volunteers who have left no stone unturned to make this event what it is today. We are happy to report that throughout the course of the 7-day mega event, we have successfully conducted 16 dynamic competitions that were a blend of legal and cultural extravaganza, in which students from all over the country have participated from various nooks and corners in a hybrid mode. The 4th edition was a power-packed package with a unique combination of alternate dispute resolution mechanisms, namely mediation, arbitration, negotiation, and client counseling competition, alongside creative writing competition, judgment writing competition, article writing competition, constitution quiz, harmony, extempo moot court competition, Folklore, Footloose, Mike Maestros, Am I Picasso, Symphony, and Glamorous Q. Our MAIMS 4th Justice J.S. Verma Memorial, National ADR, and Client Counseling Competition is a prestigious event that drew talented law students from all over the country and provided a unique platform to aspiring lawyers to demonstrate their abilities, engage in rigorous legal arguments, and gain invaluable courtroom experiences. The ADRCC competitions started off with the preliminary rounds on 12th of March with over 105 teams from prestigious institutions around the country. After an outstanding portrayal of legal acumen in their respective fields, 8 teams in each competition advanced into a neck-to-neck knockout in the knockout rounds and made it to the quarterfinal rounds. And on 13th of March, from where 4 best teams advanced to the knockout rounds and made it to the semi-finals. And we are very happy to announce that we have successfully conducted the final rounds of all our ADRCC competitions at MAIMS campus, and we're all in anticipation to see the results as we move forward today with the festivities. Navitas, the National Office, was a blend of cultural extravaganza that provided participants with horizons to unleash all their creative spirits and energies by array of writing, speaking, singing, dancing, designing, instrumental, and fashion capabilities, and providing them with a platform to showcase it with all grandeur. Through a sense of cultural events, we had the preliminary rounds of our events throughout the course of the 7 days. And we couldn't be happier to report that we have successfully conducted the final rounds of all our events yesterday at MAIMS campus. We are nothing but proud, and our hearts are filled with joy to report that this edition has recorded the highest ever milestone of the grand total 632 registrations. And a record-breaking 1,200 plus participants pan-India. All we have to say is thank you. Thank you to the diverse batch of participants who from diverse areas of the countries trusted us with their talents and believed in this platform. Thank you to the management authorities for believing in all our endeavors, trusting us enough to pull off this event and making sure that we have enough support at each step.
Thank you to our Director Madam and HOD Sir for their unmatched guidance and unwavering support at all times. And at last, our Faculty Convener Dr. Deepa Kaushik Ma'am, who equally worked with us tirelessly day and night and was a true mentor who always stood as the strongest shield. We sincerely thank her and all the faculty members for everything they've done. To conclude, we just have one thing to say. It only takes one voice at the right pitch to start an avalanche. And that is what we've embodied throughout this event. On that note, we would like to take the privilege to share with you the beautiful journey of glimpses of this edition. Thank you. Thank you, our inspiring program heads, Prableen and Smriti, for giving us a wonderful glimpse of the event. Your insights are truly appreciated. It is my privilege and honor to introduce our founder and chief advisor, MAIMS, Dr. Nankishore Garg sir, by quoting sir's very own words here. Generosity is my first statement and it will be my last statement. Sir is an eminent figure amongst the masses who with his humanitarian attribute has always contributed selflessly not only in the building of Maharaja Agrasen Technical Education Society, but has also been contributing a great deal in bringing together various driving forces who move the nation for a brighter tomorrow. Sir is a significant source of inspiration and motivation for achieving all the aims and goals of MAIMS. Owing to Sir's tireless efforts, MAIMS is celebrating his joyous silver jubilee throughout this year, having an initiation from 14th August 2023, an occasion that was graced by the presence of the 14th President of India, Shri Ramnath Kovind ji, as well. We eagerly anticipate Sir's profound words as he will share with us. Please, sir. नमस्कार। आज अपने उन शहीदों को प्रणाम करते हुए
जिनको अंग्रेजों ने एक दिन पहले ही फांसी दी, उन्हें भय था कि सुबह तक कहीं बगावत ना हो जाए लाहौर में, ऐसे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। और आज ही हमारा न्याय व्यवस्था में एक अपना नाम रखने वाले जस्टिस जीएस वर्मा जी, जो सबके लिए मैं समझता हूँ आइकन हैं, और आज हम चौथी बार उनकी याद के अंदर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सौभाग्य मिला हमें परिवार की ओर से भी कि पहली बार हमें जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रमन्ना साहब और खानविलकर जी आए, यू ललित साहब और आए, और पिछली बार हमारे जस्टिस महेश्वरी आए, और आज हमारे बीच में सर्वोच्च न्यायालय के दो बहुत ही मैं समझता हूं कि वर्मा जी के पद चिन्हों पर चलने वाले, जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी कार्य क्षमता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी देखी, राजस्थान के हाई कोर्ट से भी देखी, जस्टिस पंकज मित्तल जी और जस्टिस राजेश बिंदल जी आज हमारे बीच में। हमारा सौभाग्य है कि हमारे निमंत्रण पर वो दोनों आज हमारे बीच में हैं। जिस प्रकार अभी आपने रिपोर्ट में सुना कि लगातार कार्यक्रम 11 तारीख से चल रहे हैं। मेरा रोल केवल इतना है कि मैं महाराजा अग्रसेन सोसाइटी और महाराजा अग्रसेन के बारे में थोड़ा बताऊं। अधिकांश लोगों को मालूम है, और दोनों जजेस साहब, ये भी एक मैं समझता कोइंसिडेंस है कि दोनों ही महाराजा अग्रसेन जी के आदर्शों पर चलने वाले। हम गर्व कर सकते हैं कि हमारे अगर छोटे रूप में देखें तो उसी समाज से हैं, जिससे प्रेरणा लेकर मेरे जैसे लोग, विनीत कुमार जी, टीआर गर्ग जी, हम सब लोग काम कर रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से। मुझे सौभाग्य मिला 1974 में ऑल इंडिया लेवल पर पहली बार जब डाक टिकट निकली, तो उस समय के संचार मंत्री शंकर दयाल शर्मा जी ने जब ये पूछा कि ये ऐतिहासिक पर्सनालिटी है या नहीं, पहले ये सिद्ध करो, और आपका महाराजा अग्रसेन जी से क्या रिश्ता है। तो मैं तो एमएससी करके तुरंत बाद ही समाज सेवा में जुड़ा था, परंतु उनसे प्रभावित हुए, और उनको जब हमने बताया तो बहुत विद्वान थे, साहित्यकार थे, बाद में राष्ट्रपति भी हुए, और उनसे ही देश की सबसे बड़ी महाराजा अग्रसेन का स्टैचू कश्मीरी गेट पे जब लगवाने का हमें सौभाग्य मिला, तो उसका हमने अनावरण शंकर दयाल शर्मा जी से कराया था, जो कश्मीरी गेट पर महाराजा अग्रसेन पार्क में लगा। आज भी देश में सबसे बड़ा स्टैचू वही है। उनसे ही प्रेरणा लेकर हमने अग्रोहा का पुनर्विकास शुरू किया, और 1990 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और आने वाले कुछ दिनों में अग्रोहा फिर से विश्व के मानचित्र पर एक बहुत बड़े शहर के रूप में होगा, क्योंकि उसका जो मास्टर प्लान बना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी महाराजा अग्रसेन पे रखा गया है। और दीपक सिंगल जी, जो उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी हैं, वो आजकल उस काम को देख रहे हैं। 10,000 एकड़ में नया अग्रोहा बनाने की कल्पना को साकार करने का काम शुरू हुआ है। 5,000 साल पहले कोई व्यक्ति हुआ हो जिसकी ऐतिहासिकता पे भी संदेह करते हो लोग, उसके बारे में धीरे धीरे रिसर्च होंगी। टीलों की खुदाई में कुछ चीज़ें निकली थी, और कुछ फिर से खुदाई हो, यह भी हरियाणा सरकार ने मान्य किया है। महाभारत युद्ध में महाराजा अग्रसेन जी पांडवों की तरफ से युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, ये सिद्ध करता है कि वो हमेशा सत्य की तरफ थे, और किस प्रकार की आदर्श व्यवस्था स्थापित की उसका उदाहरण ये है कि उन्होंने अहिंसा के ऊपर बल देने के लिए यज्ञ के अंदर पशु बलि का निषेध किया, जनपदों में डिस्ट्रीब्यूट किया पूरा अपने राज्य को। जो राज्य आज राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा भरतपुर से लेकर उत्तर प्रदेश का हरिद्वार तक का ऊपर का हिस्सा और लाहौर तक का इलाका उनके राज्य में था, ये रिकॉर्डेड है, वो नक्शे अवेलेबल है।
और वो किसी एक जाति के नहीं थे कि ये कई बार कन्फ्यूज़न लोग हमारे लोग भी करते हैं। वो महाराजा थे तो सभी के थे, उस राज्य में सभी जातियां, या उस समय जातियां इस रूप में नहीं थी जो आज हो गई हैं। हमारे हरियाणा में तो अभी भी कहावत है कि 36 जाति, परंतु भारत सरकार का रिकॉर्ड 10,000 जातियों पर जा चुका है, क्योंकि रिकॉर्ड तो अजीब देश है हमारा। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं और ऐसी चीज़ें भी हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने कभी लिस्ट बनाई थी तो शायद 6,000 के आसपास थी और धीरे धीरे 10,000 हो गई। ये 20,000 भी हो सकते हैं स्पेलिंग भेद से या बाकी कारणों से, परंतु ये देश एक रहा है। इस देश को शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की थी, सोच समझ के की थी कि इस देश के दक्षिण भारत का पुजारी बद्रीनाथ में हो, क्यों व्यवस्था की थी। आज भी अभी मैं बैंकॉक गया था लोहिया जी के साथ, तो वहाँ के जो राम नौवा मानते हैं और वहाँ राज्याभिषेक जब होता तो तमिल ब्राह्मण है, आज भी बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये कितना प्राचीन देश है, इस देश के बारे में अपने को समझना समझाना आवश्यक है। हमारी शिक्षा पद्धति में वो सब चीज़ें गायब हो गई थी, अब फिर से पुनर्स्थापित होंगी। हम अपने को जानेंगे, अपनी कमियों को जानेंगे, अपनी अच्छाइयों को जानेंगे, अच्छाइयों पर गर्व करेंगे, कमियों को दूर करेंगे, जब तो एक आदर्श व्यवस्था बनेगी। और वो 1-2 साल का काम नहीं होता, वो टाइम लगा करता है। और इसीलिए अब टारगेट आपके मेरे सामने 2047, जब 100 साल मनाए उस दिन तक भारत में जितने ये कमियां हैं, अभाव हैं, ये सब दूर हों। कौन करेगा? आप, हम मिल के करेंगे। भूख, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, ये सब इतनी गहरी जड़ें ले चुका है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी कितनी जजमेंट ने कितने विचार करेंगे। मैं रोज़ जब पढ़ता हूँ, कल परसों भी एक जजमेंट पढ़ा है जस्टिस मित्तल का भी, कितना सोच समझ के देना पड़ता है, किस प्रकार माइन्यूट देखना पड़ता है। कई चीज़ें हमें पसंद आ सकते हैं, कहीं नहीं भी आ सकती आम लोगों को, पर तो न्याय को तो न्याय के हिसाब से ही देखना हो, उस कुर्सी पर बैठकर न्याय ही हो। यही तो JS वर्मा जी ने बताया हम सबको, और यही आज के हमारे दोनों बहुत ही सुलझे हुए न्यायाधीश कर रहे हैं। भारत की न्याय व्यवस्था भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र मजबूत रहे उसके लिए न्याय व्यवस्था का स्ट्रांग होना भी उतना ही आवश्यक है। परंतु न्याय व्यवस्था में भी आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनके अंदर की भी कई बार भावनाएं, वो सरमन देने का काम नहीं है। कई बार उपदेशक हम बन जाते हैं, वो प्रोफेसरों के लिए काम छोड़ें, आचार्यों के लिए छोड़ें, पर कई बार न्यायाधीश के में अंदर भी पुरानी वो जग जाती होंगी। वो उपदेश देना या फालतू का बोलने का भी कुछ रिवाज, फालतू टिप्पणी करने का रिवाज भी कुछ फिर से बढ़ रहा है। कैसे कर्म किया जाए, कैसे, ये तो आचार संहिता बाहर से नहीं होगी तो अंदर से होगी। कम से कम बोलें, उनकी तो कलम बोलनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और न्याय त्वरित मिले। इसके लिए जितने भी लेक्चर, मैं भी न्याय का इसका विद्यार्थी रहा हूँ, 1980 का पास आउट हूँ दिल्ली से, परंतु आज तक जितने भी भाषण सुने, जितने भी बड़े लोग आए कहते हैं बस मुकदमों को अब हम कम कर देंगे, और जितना कम करने की बात करते हैं उतने ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि 40% मुकदमे तो सरकार के हैं। सरकार अपील पे अपील, अपील पे अपील, उस पर कोई रोकने वाला नहीं। एक अपील के बाद अगर उसमें दम नहीं है तो फिर अपील करते हैं कि उनकी जेब से तो पैसा नहीं लगता। सरकारी वकील की तनख्वाहें या फीस इतने कम है कि डेट लेने के पैसे सामने वाला मेरे जैसा आदमी देता है। तो न्याय व्यवस्था के अंदर ये जो घुस गई हैं बीमारियां, तारीखें मिलेंगी, न्याय नहीं मिलेगा, इसको देखने के लिए भी आखिर क्या पद्धति हो। शायद 1 जुलाई से 3 ये जो हमने बदले हैं अंग्रेजों के, मैकाले के ढो रहे थे, जिसके अंदर दंड संहिता थी, न्याय संहिता नहीं थी। कितना अजीबोगरीब देश है। 1958 से हम इंडियन पेनल कोड को, CRPC को, इनको ढो रहे हैं, एविडेंस एक्ट को ढो रहे हैं। कितनी चीज़ें बदल गई आज के साइबर युग में, एविडेंस के सारे तरीके बदल गए हैं, परंतु बदलने के लिए व्यवस्थाएं तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि नोटिफाई हो गए हैं और उसकी तैयारियां भी चली रही होंगी 1 जुलाई से, उनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। मुकदमेबाजी, जिसको अभी भी मैं ये अल्टरनेट जब शब्द बोलते हैं तो मुझे कई बार चुभता है, ADR अभी भी हम बोल रहे हैं, ये मुख्य थे हमारे। समझा बुझाकर गांव में, क्षेत्र में जाति व्यवस्था मुकदमों को सॉल्व करती थी।
कोर्ट में जाना ना पड़े, ऐसी व्यवस्थाएं थी इस देश। बड़े बूढ़े बैठ के समझाया करते, आज हर चीज़ कोर्ट में जाएंगी तो कैसे सॉल्व होंगे? कितने आप न्यायालय बनाएंगे, कितने आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे? 2 शिफ्टों में गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 2 शिफ्ट में चल रहे हैं, बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं। हमारे यहाँ नहीं चल रहे। हमारे यहाँ छुट्टियाँ भी अंग्रेज़ों ने जो तय कर दी थी, ये गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, ये इसकी होंगी, ये उसकी होंगी, छुट्टियाँ कम से कम हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए रात को न्यायालय ना खुले, आम आदमी का जितना ज़्यादा ये सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, ये डिले कर रहे हैं सारे प्रोसेस को। जितने एक्टिविस्ट हैं जो लेके PIL खड़े रहते हैं, जिनको और कोई काम ही नहीं, वो आम लोगों के न्याय को और देरी से कर रहे हैं। उसमें और देरी होने का कारण ये कि सारा समय इन चीज़ों पे लगता है। तो इस देश के अंदर परिवर्तन है, शिक्षा पद्धति और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन देरी में शुरू हुए हैं, तेजी से हों, इसके लिए हमारे दोनों जो न्यायाधीश बैठे, इनसे भी मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इसको स्पीड अप कैसे हो, इस व्यवस्था के अंदर कैसे सुधार हों और लोगों तक न्याय पहुँचे। और हमारे जितने अच्छे कॉलेजेस हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनका यूटिलाइज भी किया जा सकता है। इस सो कॉल्ड ADR में कुछ कुछ हुआ है शुरू, इतने अच्छे अच्छे बड़े प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ या बड़ी रेपुटेड लॉ डिपार्टमेंट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे, उनका उपयोग करना चाहिए। उनके पास कुछ भेज के नाम नूम हटा के, भाई इसके अंदर आप अपनी ओपिनियन दे दें, ये मामले हैं इस टाइप के, सिमिलर मामलों को क्लबिंग कर दिया जाए। मेरे एक मित्र थे चतुर्वेदी, IRS थे, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 1 साल के अंदर टेक्नोलॉजी का उसका उपयोग करके मुकदमे बहुत घटाए थे। परंतु ऐसे लोग बहुत हैं अवेलेबल। आज हमारे पास विश्व के सबसे सर्वोत्तम सॉफ्टवेयर हम बना पा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नंबर 1 हैं और हमारा अपने इंस्टीट्यूट के लोग, बच्चे भी 1-1 करोड़ के पैकेज में जा रहे हैं। कुछ प्रतिभा तो है हमारे बच्चों, पूरा विश्व उसको मान्यता दे रहा है कि भारत के लोगों में दमखम है। तो ये थोड़ी न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था दोनों जुड़ी हुई चीज़ मानता हूँ। इनमें सुधार शुरू हुआ है और 3-4 साल में ये सबके सामने होगा। हमने भी इसीलिए संस्थाएं शुरू की थी। 1998 में संस्था शुरू की, एक भी संस्था 98 उसके बाद रियल सेंस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं राजनीति में भी रहा हूँ, सामाजिक जीवन भी है, सब के सब कमर्शियल लोग हो गए, सब पैसा बनाने की मशीन हो गई, कॉलेज स्कूल खोल के। परंतु उसमें जो ठीक रहना चाहें, जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 100 साल से हम वेस्ट कॉलेज या वेस्ट इंस्टीट्यूशन रोहतक में चला रहे हैं। अभी हम बनारस थे पिछले सप्ताह, सबसे पहले अग्रसेन जी का सही नाम स्टैंडर्डाइज बनारस से हुआ। सबसे पहले अग्रवाल समाज के कॉलेज स्कूल वहाँ खुले। जिस पूरे देश के अंदर कहीं भी जाएं तो शिक्षा के अंदर बड़ा योगदान है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप के 10 कॉलेज आज भी आप छांटेंगे तो 10 के 10 अग्रवाल समाज के हैं। श्रीराम कॉलेज से शुरू करें, लेडी श्रीराम कॉलेज, इंद्रप्रस्थ कॉलेज, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, रामजस कॉलेज, जितने भी आप, दौलत राम कॉलेज। क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये बात थी कि हम देश के लिए कुछ करें, परंतु उनको भी उसी एंगल से देखेंगे, ये कमर्शियल हैं तो देश की व्यवस्था के अंदर, क्योंकि कॉमर्स इतना बढ़ गया तो एक इंस्पेक्टर की नज़र से देखेंगे तो कुछ नज़र और आएगा, एक सहयोगी के रूप में देखेंगे तो कुछ नज़र और आएगा। परंतु हमारा ध्येय है 300 का एडमिशन है हमारा लॉ में हर साल, और 30 LLM में है। नॉन अटेंडिंग ये वो आते, हम नहीं करते, सीटें खाली रहें, कोई बात। आज हम 10,000 विद्यार्थियों को LKG से लेकर PhD तक हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में टॉप के कॉलेज, आज सरकार से 3 यूनिवर्सिटी में दिल्ली के अंदर बेटर रिजल्ट हम दे पा रहे हैं, इंदिरा गांधी से भी और IIT ट्रिपल, जिसकी फीस हमसे 3 गुना है सरकार का होते हुए, उससे बढ़िया रिजल्ट हम दे पा रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो टीचर है बेस्ट पेड है, हमारे यहाँ से सरकार में ही जाएगा, नहीं तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। हमारा जो एडमिशन है वो बिल्कुल फेयर है, 90% तो गवर्नमेंट कर रही है, बाकी 10% उनकी सुपरविजन में है। उसके बाद भी सरकार से जितना शाबाशी मिलनी चाहिए या कॉपरेशन मिलना चाहिए, दिल्ली सरकार ने तो शिक्षा विभाग को टोटली ठेके पे दिया हुआ था। अब देखो शायद कुछ सुधार हो, इसलिए यही कामना करूँगा कि होली से अच्छे दिन फिर शुरू होंगे अब, और देश अच्छे रास्ते पर चलते हुए सबको न्याय मिले।
इसके लिए हम भी अपना योगदान दे सकें, और उसके लिए मेरा लॉ डिपार्टमेंट, रजनी मल्होत्रा जी भी बाई चांस प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं, प्रवीण जी और बाकी इनके सभी सहयोगी बहुत मेहनत कर रहे हैं। और सबसे नया डिपार्टमेंट है हमारा, मेरे ख्याल में भी तीसरा बैच निकलेगा, और उसके बावजूद हमने अपना एक स्थान बनाया है। और आने वाले दिनों में 15-20 साल तक हम भी जस्टिस मित्तल जैसे, जस्टिस बिंदल जैसे जुडिशरी में भी लोग भेजने में समर्थ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, जो देश की न्याय व्यवस्था को और अधिक तेजी से चलाकर सबको न्याय देने की जो एक ध्येय है, जो राम की कल्पना थी, गांधी की कल्पना थी, अंबेडकर जी की कल्पना थी, उसको हम सब मिलकर साकार करेंगे। जय हिंद। Thank you so much, sir, for setting up the right example for us to look up to. It is always a pleasure to listen to your insightful words about the role of the society and education for bringing good human beings. We are extremely delighted to have with us our guest honor for the day, Honorable Mr. Justice Rajesh Bindal, Judge Supreme Court of India. Lordship served as an advocate in the High Court of Punjab and Haryana, representing various entities including the Income Tax Department and Chandigarh Administration. Lordship is the former Chief Justice of Allahabad High Court and was recently elevated as a Supreme Court judge. Notable for his expertise, he chaired numerous committees addressing electronic evidence, child abduction, and court management systems. We kindly request your Lordship to address the audience and share your invaluable wisdom with us. A very good morning to all present here. आपने आज का दिन देखा क्या है, तो सबको शायद याद आएगा, एक पुराना वो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा. So just see the day chosen for this function. On this day, 3 of our freedom fighters, Chandrasekhar, Bhagat Singh and Rajguru, they sacrificed their life for the nation. What was their age? 23, 24 only. And as has been told by Dr. Garg, even the British people also apprehended that they may not be able to execute them, because day fixed was 24th. So they executed them on 23rd only, late, 7 p.m. Cremated also. And that place was, rather is not was, in Hussainiwala. And just see what the British people did at the time of partition also. That area was given to Pakistan. It was in 1961 with 12 villages we exchanged that area, and it was brought into India from Pakistan. And now this is in district Fazilka, I think, Fazilka, Firozpur. So there the memorial has been constructed now. It is worth seeing, going. After you go there, then you realize that what our freedom fighters had done for them. Now coming to any educational institution or any function of the... Now we have seen the address of, heard the address of Director Ma'am and Dr. Garg also. Now they have given you the total idea of this program. And the program is not limited to law only, if you see the long list. This is a legal cum youth festival as used to be there in the universities. Cultural program is there because process of learning is more while you do it yourself. If you don't do it, you just listen it, then the process of learning may not be that. Now long list is there. You all know, you have already participated in that. I did not go into all this. But one thing important here is that they have
given you the taste of technology also in this. How some of the programs are online and some are offline. So your participation in person is also there, and online also you participated in the process. So you had the taste of that also. Now if you talk about different subjects which were there in this competition, I think जैसे पुरानी एक कहावत है, पुरानी क्या टाइम टेस्टेड है सारी, कि सूरज को दिया दिखाने के बराबर है आपको कुछ उसके बारे में अगर बताना हो, because you are all very well informed. And I would say, yes, you are informed. Information is available on the website, a lot of search engines are there, we all know. And with the now AI also, we have proceeded further. But that is the information only. What anybody is uploading, we do not know whether it is right or wrong. What is right or wrong, you can learn only if you come to a college, a school. That your teacher only can guide you what is right and wrong. And they can make you understand whatever information you get from the website, how you can see it is right or wrong, so that you can build your career on that. Now I'll just pick up from here only little things which we have seen. Institution, about the institution you have been told how it has been built up the last 2 decades and the achievements thereof. I will not repeat that. In competition also, you have seen the 16 competitions, 645 teams, 1200 plus participants, and 45 will win the final prizes. Yes. Winning, yes, anybody is happy. But that is not the end, because even a winning team would have learned something from a losing team also, because they will also realize that they could have improved, because the other side may have lost for reason ABC, but they also had some plus points. So even losing any competition is also not discouraging, because you also learn, you also get a lot of experience in participation. If you talk about our time, in 3-year course, when I passed out in 1985, nobody knew about these moot courts and all that, all these competitions. Youth festival, yes, used to be there, but not these kind of competitions. So this is all what started after the 5-year course, I think, was there. So this is how you are learning. So continue participating in all these events, and you will always continue to learn something. Now you have been told about Maharaja Agrasen also. So I need not repeat. This is the institute in his name, society in his name. Now what is the motto of the institute? You must have seen on all these papers you have given. What is mentioned there? Yoga Karmasu Kaushalam. What is the meaning of that? The meaning is efforts alone bring success and not merely decision. So if you decide to go to, suppose from Delhi to Bombay or any place, and you just decide, yes, I will go. If you don't make the effort, you don't take the means of transport, you can't reach there. You want to win the World Cup also, now the cricket is going on. Unless you make effort, you can't win it. So mere decision is not good enough. This is the motto. This is the message given any student who is coming to this. So this is the first and foremost message, I think. And in this profession, it applies on all fours, for the reason that in this profession, you need to be a learner throughout your career. There is no end to it. If you pass out from a college, it's not that you stop learning. As has already been told now, there are not many new laws always coming. 3 new major, criminal major act we call them. From 1st of July, these will be enforced. And for you, I think this will be the beginning. You will continue dealing with these new statutes. So this is how new acts also come, new problems come, new type of litigation is coming. You must have seen in our time, litigation used to be normal, civil, criminal, or maybe revenue or some tax matters. And now you are daily seeing what kind of litigation is coming in court. A lot of provisions of constitution which were never touched are being interpreted, because the issues are being raised. Now this college is affiliated with whom? You must have seen the name, Guru Gobind Singh Indraprastha University. You must have heard about Guru Gobind Singh also. Why I am just sharing with you all this? Because many things you know about this law and all that. Many people say, naam mein kya rakha hai? Kuch nahi hai.
These are the names which we always need to learn by heart for our motivation, for our role models, and see what they have done for the country, what they have done for the masses, so that we also imbibe those things, some of them at least, and do our best in future. What was his age when he died? Hardly 41 years. And see the sacrifice, many of you may be knowing about him. He was the 10th Guru, known as Sarbans Dani, who sacrificed everything. 2 of his sons died in war. 2 were buried alive in the wall, where now a Gurudwara is there, Fatehgarh Sahib. Just see the sacrifice. Who will do that? Only for the country, for their people. And this is not the only thing. If you see our freedom struggle also, how much lawyers were involved in that? You must have heard a lot of names. Mahatma Gandhi, we all know. And he was the only lawyer probably ever since we got independence who was given the title of Mahatma. Nobody else has been given. Father of the nation, we say. Jawaharlal Nehru is there. Motilal Nehru was there. Lala Lajpat Rai. A lot of names are there. They were all lawyers who left their practice for the nation. Selfless service, this is what they had taught us. Now, another word used is Indraprasth in the university, capital of, in the Mahabharata, we know, and what has been, this has already been told you that in that also mediation was tried. So we have long history of all this. But on failure, what was the result? Same instance is there in Ramayana also. Angad was sent that if the war can be avoided, but no. If somebody is adamant, if one party is adamant, then the results are disastrous. Now another important name which comes is late Justice J.S. Verma, in whose memory this all is being held 4th year now in a row. You must read about him also, what he has done for the country. There is a long list of things, or the judgments or work he has done. But most important was Vishakha judgment, you all must be knowing about it. Total vacuum was there in that area. So guidelines were laid down, which are still applicable. Then criminal law amendment also, you know what happened in Delhi at that time. So he was instrumental, committee was constituted, his suggestions were accepted, and a lot of amendments were made in the criminal law. Then he was also one of members of chairing the committee. It was a commission for review of working of constitution. And he headed a committee regarding fundamental rights, fundamental duties. Because just see, in working of constitution, we all know we have fundamental rights, everybody thinks about that. But who talks about the fundamental duties? It's a balance only. Somebody's right is others' duty. If we think about all that, I think total, as you say in the accounts, balance will be trial balance or the balance sheet will be equal. But we all think we have right. There is a box, if you continue taking out what you need from that and nobody is putting anything in that, it will be empty one day. So we have to discharge our duties, put in that box, and if somebody has a right, he will continue taking out, balanced will be there. So this is, I think, fundamental duties which were added by the 42nd Constitution. It was not there in the earlier, initial our Constitution. Now if you see, the competition, yes, what you learn from that, lot of things, you can understand the problem if you participate in any competition, research is there, drafting is there, presentation, and communication skill is one of the most important part in this profession. Because unless you communicate your viewpoint, in the discussion also with your client, what to talk about the court will come later on. You can't be a successful lawyer. And most important is your fellowship. Client counseling is a new concept now, or your negotiation is there. So your generation which has to take up all this, I think need to be sensitized on all these things. When this ADR was introduced, every lawyer was apprehensive that probably their practice will be taken away because this is a new concept which has come.
Many people say it is alternate dispute, but it is the most appropriate dispute resolution mechanism, where both the parties have win-win. All this you read in the lot of articles. But mediation, this is an independent practice now. A lot of cases we refer from the courts to the mediators who are independently on this practice. And there are a lot of trained mediators also. And the success rate is about 20 to 25% of the cases referred to. This is not a small percentage. A lot of matrimonial issues which come to the Supreme Court, we also refer to the mediation. And many are settled, and settlement of one case which may be there before the Supreme Court results in settlement of maybe 10, 20, 30. There was one judgment of the Supreme Court where 40 plus cases were settled between the parties. So because litigation is increased, especially in matrimonial cases, it multiplies. So, and I can share in Allahabad also, we had tried a pre-litigation mediation in matrimonial matters. I think there also we got 30% success rate of the people who approached us. Now, a little bit I tell you about the court and the technology being used. Many of you may have visited the National Judicial Data Grid website. I don't know how much of you, because that is the website I think all the students visit. It has concern with the court, National Judicial Data Grid, NJDG. Now you have the information. Mr. Gard talked about the delays and all that. So you have the information about the cases pending throughout the country on this website. Nowhere in the world so much of data is available. And the reason is that at no place so much of litigation is there. So you have the information of about 79,000 Supreme Court matters, about 62 lakhs cases pending in different high courts, and about 4.40 crore cases pending in the district courts. You have the information of all this on a click of a button. There is app also on which you can extract that information without any delay. There are a lot of other information on that. The reasons for delays are also mentioned because we analyze the data also. That is available in public domain. You can also visit that because you are on the other side. You can also carry out research and give suggestions that how this can be solved, how we can ease out these things so that the delays are checked. There is another website which is very useful for you, ESCR. Many of you may not be knowing it. On this website, you have 36,000 Supreme Court judgments and 1 crore 26 lakh High Court judgments, all in searchable mode, better than any private player. No charge, all free. And presently, the judgment will be first uploaded on that website, then only any private player will take. So this is the first one. There will be a time lag of maybe minutes only if somebody is just following that. But still, immediately, searchable. All of you have this access, free at home, carry out any search on anything. And now we have introduced the concept of neutral citation also. All High Court judgments have their citations, the Supreme Court also. They're all year-wise, and all High Courts and Supreme Court, words are given and then the judgment number. You can use that also. Artificial intelligence, yes, is coming, I think, maybe good or bad, time will tell, but don't depend on that. That is the main thing. But regarding use of technology, I can share with you. About 2 weeks back, there was a program in Bhopal. We have a National Judicial Academy there. So, judges from England also had come. The director of the training institute and all that. So, there was presentation of the IT being used there and IT being used here. So, I can share with you, I think with a pride only, that there the work on IT in judicial system is not even 10 to 20% of what we have done here. You see that about IT also, it was touched in the address of Dr. Garg. I think top companies of IT in the world are headed by the Indians only. Just keep in mind, we have sent only few there to head those companies, rest are all here only. So you can do wonders. Everybody is here only. Here we have in lakhs. And here also we are working for them basically. Why can't we work for our country also? But one message is there, yes, do some pro bono work also. You can always adopt, the institutes can always adopt some nearby villages because a lot of legal service authority act is there, in that activities are there. So you can always adopt this
and do some good work there, because this experience will help you throughout your career. Otherwise, after joining the profession, you may not get that experience. And just mind it, there is only one post in the Constitution, that is of the Attorney General for India, and that is of the legal profession. There is no other profession for which there is a constitutional post. And there is always a space at the top. You can always reach there. You only have to aim and put your hard work in that. Yes, ethics are most important. That also you have to take care. With these words, I am thankful to the Society Institute for giving us also an opportunity to learn something while coming here. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir, for encouraging us towards the process of experiential learning and leaving an impact through thought-provoking messages. Also, we are immensely grateful for sharing your invaluable knowledge about the areas of Constitution, artificial intelligence, and ADR with us. Thank you so much, sir. We are extremely delighted to have with us our chief guest, Honorable Mr. Justice Pankaj Mithal, Judge, Supreme Court of India. Lordship was elevated to the Supreme Court in February 2023, began his tryst with law in 1980s. After 2 decades of legal practice, Justice Mithal entered the next stage of his legal journey when he was appointed as a judge in the Allahabad High Court and then as the Chief Justice at the High Courts of Jammu and Kashmir and Rajasthan. Lordship served some remarkable judgments, namely Micro Marble Private Limited versus Office of Income Tax Officer, Gobind Rai versus State of Uttar Pradesh, Ghanshyam versus Yogendra Rachi. We kindly request your Lordship to address the audience and share your invaluable wisdom with us. सभी को मेरा प्रणाम। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए मैं जस्टिस जे.एस. वर्मा, जो हमारे मेंटर भी रहे हैं, उनको नमन करता हूँ। यहाँ बैठे सभी मेरे भारत भाग्य विधाता विद्यार्थीगण, मेरे बड़े भाई जस्टिस बिंदल साहब, श्री नंद किशोर गर्ग साहब, लोहिया साहब, टी.आर. गर्ग साहब और डॉक्टर रंजनी मल्होत्रा जी, जस्टिस वर्मा साहब की पुत्री यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी नमस्कार करता हूँ। शुभ्रा वर्मा जी, सभी उपस्थित विशिष्ट जन, देवियों सज्जनों, मुझे अपार खुशी है कि आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के बीच खड़ा हूँ। मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। ये इंस्टीट्यूट जो है महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर है। तो मुझे यहाँ आने पे 2 वजह से बहुत खुशी हुई। पहला तो ये कि मुझे विद्यार्थियों के बीच में आना पसंद है और मेरे को आने का अवसर मिला। दूसरा, जस्टिस जे.एस. वर्मा साहब की स्मृति में ये 4th कंपटीशन किया जा रहा है, तो मुझे उनसे जुड़ने का एक बार और सौभाग्य प्राप्त हुआ। जस्टिस वर्मा साहब जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति थे, लगभग उसी वक्त मेरे पिताश्री भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति थे। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद काफ़ी आना जाना रहा और उनके एक सहपाठी जस्टिस ए.एन. वर्मा साहब
जिससे उनकी बड़ी घनिष्ठता थी, वो मेरे पिता के साथ ही एक ही बैच में हाई कोर्ट जज बने थे। तो जब भी वो आते थे जस्टिस A.N. वर्मा साहब के यहाँ जाते थे, तो वहाँ A.N. वर्मा साहब मेरे पिता को भी अपने यहाँ बुलाते थे। तो उस नाते मुझे जस्टिस वर्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश हुए तो किसी कार्यक्रम में उनका प्रयागराज आना हुआ और नेशनल साइंस एकेडमी में एक उनका लेक्चर था। लेक्चर लॉ से संबंधित था, लेकिन साइंस एकेडमी वालों ने ऑर्गेनाइज़ किया था। बहुत इलीट छोटी सी गैदरिंग थी और जस्टिस वर्मा साहब ने कोई 40-45 मिनट जो है वहाँ वार्ता की। बहुत अच्छी टॉक उस समय थी और फिर उन्होंने कहा कि अभी 15 मिनट का समय है, तो मैं हाउस से अनुरोध करूँगा कि उन्हें कोई सवाल पूछने हो तो पूछें। अब एक इलीट क्लास होती है और उसमें फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे किसी का सवाल पूछने का जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। पूरे हॉल में केवल और केवल एक हाथ उठा और वो भी बड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति का। तो जस्टिस वर्मा ने कहा, यस, हु इज़ देयर? तो डॉक्टर BBL सक्सेना साहब, जो वाइस चांसलर मेरठ यूनिवर्सिटी भी रहे थे, वो खड़े हुए। उन्होंने कहा, मुझे एक सवाल पूछना है। अब जस्टिस वर्मा एकदम जो है बहुत एम्बेरस्ड उनको फील हुआ। उन्होंने कहा, अरे सर, आप तो हमें ज़िंदगी भर पढ़ाते आए हैं, हम आपसे प्रश्न पूछते रहे, आज आप हमसे प्रश्न कैसे कर रहे हैं? उन्होंने कहा, यही तो जो है ये जीवन का मज़ा है। देखो, मेरा विद्यार्थी डॉक्टर BBL सक्सेना ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जस्टिस वर्मा साहब को पढ़ाया था। बोले, मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरा विद्यार्थी एक ऐसी जगह पर पहुंचा है जहां वो दुनिया को राह दिखा रहा है और मैं उससे राह समझना चाहता हूं अपने आगामी जीवन की। उन्होंने, जस्टिस वर्मा ने उनको स्टेज पे बुलाया अपने साथ और हंसी खुशी के वातावरण में एक अच्छा माहौल बना और ये जो है वहीं सभा जो है समाप्त कर दी गई। मेरा केवल कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी खुशी मिलती होगी जब आपके गुरु, आप और एक विद्यार्थी का इस तरीके से आमना सामना होता हो। और जस्टिस वर्मा ने उसको कितने अच्छे तरीके से निभाया और एक समाज में मैसेज दिया कि क्या गुरु की जो है वो एक स्थिति होती है और एक समय आता है जब गुरु को भी शायद शिष्य की शरण में जाना पड़ जाता है। तो ये कुछ इसमें मेरे को 2-1 बातें जस्टिस वर्मा साहब के बारे में पर्सनल नोट पे मालूम थी, तो मैं आपसे शेयर करी। वैसे उनसे मेरी काफ़ी मुलाकातें नेशनल जुडिशल एकेडमी में भी हुई। वहाँ वो रिसोर्स पर्सन के तौर पे आते थे और मैं भी फिर एक जज होने के नाते परंतु एक विद्यार्थी के तौर पे वहाँ जाता था और वो हमारे को बहुत सी बातें जो हैं अपने कार्य प्रणाली के बारे में बताया करते थे। आज जो ये 7 दिन का कार्यक्रम हुआ है, ये ADR और क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन। अब अगर हम देखिए न्याय व्यवस्था तो अपनी जगह कार्य करती रहती है। न्याय व्यवस्था की कुछ अपनी कमियां हो सकती हैं, लेकिन भारत की न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी और कार्यशील है। लेकिन फिर भी कुछ डिले होता है, उसकी वजह से समाज को जो है दिक्कतें आती हैं। एक मुकदमा 20-20 साल चलता है, तो उसमें हम न्यायपालिका को तो बहुत अधिक ब्लेम शायद ना कर पाएँ, क्योंकि जो कार्य कुछ एक समय सीमा में होने चाहिए उसमें नहीं हो पाते और उसके बहुत से कारण हैं। उन वजहों में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन
अदालतों पर, कोर्ट्स पर जो है मुकदमों का कुछ बर्डन हमें कम करना पड़ेगा। बहुत से फ्रिवलस, जैसे अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की भी बात हो रही थी, इसको बहुत एक समय में बढ़ावा दिया गया, तो इन सब चीज़ों को कुछ कर्टेल करना पड़ेगा। और ADR जो है एक बड़ा पावरफुल वेपन है जिसके द्वारा हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ समस्याएं, कुछ डिस्प्यूट्स इस प्रकार की हैं कि उनको हम कोर्ट में जाने से रोक सकते हैं। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन, ये 3 ADR के मुख्य मोड्स हैं जिससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और कोर्ट के ऊपर बर्डन जो है उसको कम कर सकते हैं। जब हम आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो मुझे सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर की याद आती है। कैसे अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, 2 मित्रों में जो है आपस में दूरी बन गई, क्योंकि उनके जब जुम्मन शेख की खाला से कुछ विवाद हुआ और पंचायत की मांग हुई, तो उनकी खाला ने अलगू चौधरी जो कि मित्र था, उन्होंने कहा तुम ही मेरे आर्बिट्रेटर हो जाओ, सरपंच हो जाओ, लेकिन न्याय करो। तो अलगू चौधरी बहुत मना करते हैं कि खाला आप जानती हो मेरी उससे कितनी दोस्ती है, फिर भी आप मुझे रख रहे हो। बोले दोस्ती की खातिर क्या ईमान बेच दोगे? तब अलगू चौधरी को जो है सरपंच का दायित्व निभाना पड़ता है। अब जुम्मन शेख ने खाला की संपत्ति अपने नाम लिखा ली और फिर खाने को उसको देता नहीं था। यही उस बुढ़िया का रोना था। तो सबकी बात सुनने के पश्चात अलगू चौधरी चाहे कितना भी मित्र रहा हो जुम्मन शेख का, उसने ये कहा कि आप गलती कर रहे हैं, आपको या तो खाला का ध्यान रखना है, उनको 2 वक्त का भोजन, रहने को जगह देनी है, अथवा वो सारी संपत्ति वापस करनी है। अब इस निर्णय के बाद दोनों में आपस में काफ़ी मनमुटाव हो गया और जुम्मन शेख को तुरंत ही इसका बदला लेने का एक कारण मिल गया। जब अलगू चौधरी ने अपना एक बैल किसी साहूकार को बेचा और उसका पूरा पैसा 1 महीने में देने की बात थी, लेकिन पैसा देने से पहले ही वो बैल जो है मर जाता है। तो उसका कहना था कि आपने तो मुझे बेकार बैल दिया, मर गया, तो अब पैसे किस बात के दूं। लेकिन वो ये भूल जाता है कि बैल से बहुत अधिक कार्य उसने लिया, दुगना बोझा उस पर डाला, तो उस वजह से इस पे भी पंचायत बैठी और इसमें जो है साहू ने जुम्मन शेख को सरपंच नियुक्त किया कि ये तो दोनों दुश्मन हो गए हैं, तो जुम्मन शेख तो अब अलगू चौधरी के विरुद्ध ही निर्णय देगा। परंतु वहाँ भी बदला लेने का बहुत उसने सोची, लेकिन जब पंच की कुर्सी पे बैठा तो जुम्मन शेख ने भी फैसला अलगू चौधरी के पक्ष में दिया और कहा कि अगर पहले ही दिन जब बैल बेचा था सारा पैसा दे दिया गया होता तब क्या स्थिति होती, और फिर अगर बैल मरा है तो ये तो बाद में मरा है, सौदे के बाद पैसा देने का वादा था 1 महीने में, वो तो आपको देना पड़ेगा। उनकी दोनों की दोस्ती दोबारा होती है और इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी सबको, समाज को एक सबक देते हैं कि पंच में परमेश्वर बसते हैं और चाहे कुछ भी हो, वो न्याय की कुर्सी पे बैठ के ये जो दोस्ती, शत्रुता और रिश्तेदारी है, ये सब बहुत दूर की बात हो जाती हैं और हमें नियम से, विधि के अनुसार जो है निर्णय लेना पड़ता है। तो पंच परमेश्वर की इस कहानी से हम ये भी सीखते हैं कि बहुत सी डिस्प्यूट्स, बहुत से जो विवाद हैं,
वो हम आपस में बैठ के पंचों के द्वारा जो है निर्धारित करा सकते हैं। कोर्ट्स में ये मुकदमे जाने ही नहीं चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जब मैं वकालत करता था तो एक बेंच के सामने बड़ा विचित्र केस आया। गांव में जो है एक शादी चल रही थी, उसमें शादी के दौरान दूल्हा दुल्हन में किसी बात को लेके जो है कुछ झगड़ा हो गया और शायद मार पिटाई की नौबत आ गई और शादी जो है कैंसिल कर दी गई। इसी का विवाद जो है नीचे अदालत से चलते चलते शायद इंजंक्शन का मैटर था, हाई कोर्ट में आया। तब हाई कोर्ट में भी न्यायमूर्ति द्वय जो थे बड़े असमंजस में थे कि ऐसे मुकदमे में करें क्या, इसमें कोई विवाद तो है नहीं और ये झगड़ा क्यों शुरू हुआ और कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसमें अदालत क्या करेगी। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक सुंदर निर्णय दिया कि ये कोई विवाद का विषय नहीं है और अगर कोई विवाद है भी तो ये ऐसा विवाद है जो गांव के बड़े लोगों के बीच में पड़ने से के मध्य बैठने से सुलझाया जा सकता था। इसे अदालत में आना ही नहीं चाहिए था और इसलिए हम भी इस पे निर्णय न देके रिक्वेस्ट करते हैं कि गांव के बड़े लोग बैठ के इस विवाद को सुलझाएं और देखें कि एक तो इस प्रकार का विवाद जो है वो घर की घर में ही निपटाया जा सके और दूसरा और बड़े जो गांव के या शहर के जो भी संभ्रांत लोग हैं वो इन चीज़ों को देखें कि ये इस प्रकार के विवाद अदालत में ना आए। तो ये एक आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया रही है और हमेशा से रही है, लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे इसको छोड़ दिया। अब नया आर्बिट्रेशन एक्ट आ गया। ये आर्बिट्रेशन एक्ट आया तो सभी के हित के लिए हैं, परंतु लगता कभी कभी ऐसा है जैसे मल्टीनेशनल्स या फॉरेन जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये सब चल रहा है। एक आम नागरिक को जो है आर्बिट्रेशन एक्ट का जो है फ़ायदा नहीं मिलता। एक आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, एक किसी छोटे शहर में दो भाइयों की छोटी सी दुकान है, पार्टनरशिप की दुकान है, एक विवाद होता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में जो है आर्बिट्रेशन का क्लॉज है। अब एक पंच नियुक्त करने के लिए भी उन भाइयों को हाई कोर्ट में जाके दस्तक देनी पड़ती है, मुख्य न्यायाधीश के पास अर्जी लगानी पड़ती है कि आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दीजिए। इस एक छोटे से शहर में रहने वाले व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट तक जाना ये संभव नहीं है। फिर वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं तो आर्बिट्रेटर भी उसकी भी फीस देनी होती है। आर्बिट्रेटर अवार्ड देता है, फिर वो अवार्ड जो है जिला जज के यहाँ जो है उसको चुनौती दी जाती है, उसकी फिर हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया ये आर्बिट्रेशन में जोड़ दी गई है, जो आर्बिट्रेशन का जो असली रूप है उसको समाप्त कर देती है। और जो त्वरित न्याय की बात आर्बिट्रेशन करता है वो शायद इसमें हम खो देते हैं। ना तो ये त्वरित न्याय दे पा रहा है और ना सस्ता न्याय दे पा रहा है, सुलभ भी नहीं हो पा रहा। तो इसलिए ये जो न्याय प्रक्रिया आर्बिट्रेशन की है इसकी ओर भी हमें दोबारा से देखना पड़ेगा और उसको भारतीय परिवेश के अनुसार हमें तब्दील करना होगा। मीडिएशन जो है महाभारत काल में भी हमने देखा, भगवान श्री कृष्ण मीडिएटर बन के गए। आज तो हम लोग वकीलों को कुछ ट्रेन मीडिएटर्स हमारे पास हैं, लेकिन वहाँ तो कौरव और पांडवों के बीच में मीडिएटर बने भगवान श्री कृष्ण, और वो गए और उन्होंने
दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा आधा राज नहीं, कोई 5 गांव दे दो। एक बड़ी सुंदर रशिमरथी कविता है, उसमें इसके बारे में जो भगवान कृष्ण जाते हैं तो उसका वर्णन है। वो लिखते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। तो ये देखिए, भगवान के भी प्रयास कभी कभी विफल हो जाते हैं और अंत में आप सभी जानते हैं, युद्ध हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें कोई विजय नहीं हुआ। एक तरीके से सब हारे, 5 पांडव बचे जरूर, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। अर्जुन तो पहले से ही विषाद में थे, भगवान के समझाने पे युद्ध अवश्य करते, लेकिन कुछ नहीं। जो कहते हैं ना, हर युद्ध के बाद विजेता भी जो है एक टांग का आदमी हो जाता है, उसी प्रकार का ये युद्ध हुआ। यहाँ तो एक टांग नहीं, दोनों टांग ही समाप्त हो गई, कुछ बचा ही नहीं, किस परिवार में किसी के कुछ नहीं बचा। पांडवों की आगे की पीढ़ी तक समाप्त हो गई। वो तो भगवान के कहने पे परीक्षित का बेटा हुआ के बचाव बीच में पड़ने पर, वरना तो शायद अभिमन्यु चले गए थे, सब चले गए थे, कोई न गुरु बचा, ना कोई किसी शिष्य बचा, सब समाप्त। तो ADR जो है ये बहुत पावरफुल वो है, लेकिन इन सब समस्याओं की जड़ क्या है? अगर आप देखेंगे तो हमारे चरित्र की वजह से ये सब समस्याएं, डिस्प्यूट्स, समाज में कुरीतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। तो अब कहते हैं जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदर्श वाक्य है, ततो धर्म ततो जया, तो जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अब धर्म क्या है? धर्म एक राइटियस लिविंग है, राइटफुल वे ऑफ लाइफ। हम अच्छे से सरल रूप में सादगी से रहेंगे, सही कार्य करेंगे, यही हमारा धर्म है। और जहाँ ये सब होगा तो वहाँ विजय अवश्य होगी। इसमें कवि नीरज ने बहुत सुंदर शब्दों में 2 लाइन कही है। हम लोगों ने अपना जो है, जो ये एक हम आर्य पुत्र कहलाते थे, आर्य श्रेष्ठ कहलाते थे, हमने ये अपने चरित्र का परित्याग कर दिया। और इसके कारण भी बहुत हैं। एजुकेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि मूल्यों पे आधारित नैतिक शिक्षा, इससे हम वंचित हो गए हैं। किसी विद्यालय में सब कॉमर्शलाइजेशन है, कोई मॉरल साइंस नहीं पढ़ाता, कोई देशभक्ति नहीं सिखाता, तो हमारा चरित्र हनन हो गया एक तरीके से। तो गोपाल दास नीरज लिखते हैं, अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाना चाहिए, अब तो मजहब एक ऐसा भी चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाना चाहिए। तो अगर हम इंसान बनेंगे तो बहुत से विवाद अपने आप समाप्त हो जाएंगे, उत्पन्न ही नहीं होंगे। समाप्त होने की बात क्या, उत्पन्न ही नहीं होंगे। और अदालत में हमें आना पड़ता है, हमारा विवाद हमारे भाई से है, मित्र से है। अगर हम अच्छे तरीके से बात करें, अपनी बात को रखें, तो शायद वहीं हल हो सकती है। लेकिन नहीं, कोई बात जो है कायदे से रखी नहीं जाती, नाराज़गी में के वातावरण में काम होता है, तो कभी सहमति बनती नहीं। तो इसीलिए वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये मैं समझता हूँ, ये तो हर कोर्ट में भी लगा देना चाहिए, जिससे वकील लोगों को भी पता हो
कि कब कहाँ और कैसे कहना चाहिए। दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द जज ऑल्सो, ट्राई टू रीड द माइंड ऑफ द जज, और कितनी बात कहनी चाहिए उतनी बात कहें और फिर शांत हों, तो शायद कोर्ट में भी समय एक मुकदमे में ज़्यादा ना लगेगा। तो हर कोर्ट में ये लगा देना चाहिए कौन सी बात कब कहाँ कहनी चाहिए, इस बात का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ बस सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि आप लोग एक अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत से कार्य करिए, तो हर जगह इंसाफ अपने आप हो जाएगा, हर जगह इंसाफ हो जाएगा। बस ये 3 शब्द ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उर्दू के शब्द हैं, लेकिन उर्दू भी बड़ी मीठी भाषा है, तो ये जो हर भाषा में कुछ शब्द बहुत मार्मिक होते हैं, उर्दू भाषा के ये 3 शब्द मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इंसानियत, इंसाफ और ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। अब दूसरा जो हमारी न्यायपालिका है, ये बहुत पुरानी अंग्रेजी समय की देन है। थोड़ा सा बदलाव हमें इसमें भी लाना पड़ेगा, इसका भारतीयकरण भी करना पड़ेगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे चीफ जस्टिस महोदय इसके भारतीयकरण में कुछ कदम उठा रहे हैं। उन्होंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जितने भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हैं, लगभग 34,000 के करीब, उन सब का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया है। लगभग अनुवाद पूरा हो गया है, 24 या 25,000 मुकदमों का हो गया, 10,000 के करीब बाकी हैं। तो इसका अनुवाद कराने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारे जो नागरिक हैं वो अपनी भाषा में अपने निर्णयों को पढ़ पाएंगे, समझ सकेंगे। हर व्यक्ति इस देश में अंग्रेजी उतनी नहीं समझ पाता, या मोटी मोटी बात समझता है लेकिन बारीकियां नहीं समझ पाता। अगर ये हिंदी में अवेलेबल होंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी। तो ये एक भारतीयकरण की तरफ एक स्टेप है। दूसरा, जो न्याय की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है, तो इसको भी कुछ चेंज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बार में लाइब्रेरी में जो एक नई स्टैचू लगाई गई, तो उसमें जो न्याय की प्रतिमा है, देवी की प्रतिमा है, उसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार जो थी उसको हटा के एक पुस्तक दिखाई गई है। पुस्तक, उसको आप मान लीजिए कोई भी पुस्तक हो, चाहे भारत का संविधान ही हो। और तीसरा, जो वो एक ट्यूनिक या फ्रॉक पहनती थी, उसकी जगह एक उसको साड़ी में दिखाया गया है। तो ये भारतीयकरण जो न्यायपालिका का है, हमने देरी से शुरू करा, परंतु हम इसकी ओर अग्रसर हैं। और ये जब तक नहीं होगा तो सबको न्याय नहीं मिल सकता। हम नारे तो बहुत अच्छे अच्छे देते हैं, न्याय चला निर्धन से मिलने, घर घर न्याय, लेकिन घर घर न्याय तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उसकी भाषा में न्याय मिलेगा। अब इसके लिए प्रयास जारी है। अब ये मीडिएशन जब हम करते हैं, आजकल हर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर अदालत के साथ मीडिएशन सेंटर लगा हुआ है। अब मीडिएशन भी सब अंग्रेजी भाषा में होता है। वहाँ पे इन पर्सन जाना पड़ता है लिटिगेंट को, वो अंग्रेजी उतनी आसानी से समझ नहीं पाता, मीडिएटर भी अंग्रेजी में उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता, और लिटिगेंट अपने दिल की बात अंग्रेजी में या हिंदी में जिस भी भाषा में कहता वो उतना उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये मीडिएशन की भी भाषा जो है हमें हिंदी करनी पड़ेगी या भारत की अन्य भाषाओं में अब उसको अपनाना पड़ेगा, और तभी हमारा मीडिएशन अधिक सक्सेसफुल हो सकता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और यही कहूँगा, एक अच्छे इंसान आप बनिए और इंसानियत की राह पे चलिए, तो हर जगह इंसाफ स्वयं हो जाएगा।
वंदे मातरम, कल्याणमस्तु। और इस कंपटीशन में जो भी बच्चों को विजय प्राप्त हुई है या जिनको असफलता मिली है, वो ये ना समझें कि हम बहुत उसका गरूर ना करें और विफलता पे परेशान ना हों। ये हार जीत जो है ये समय का खेल है और हारने वाला कई बार कहीं अधिक तेज दौड़ में आगे निकल जाता है। तो आप इसका ध्यान रखें और मेहनत करते रहें और इंसानियत की तरफ आप कदम बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you, sir, for sharing interesting facts about your journey with Justice J.S. Verma, sir. The legacy of this prestigious name will inspire generations to come. Also, your motivation and guidance about arbitration, mediation, justice delivery, and ADR mechanisms, along with our holy scriptures, are truly instrumental in shaping the course of our future. The moment we all have been waiting for is finally here. This day transcends mere extravaganza. It serves as a conduit for the exchange of ideas and experiences, invigorating the efficient utilization of alternative dispute resolution mechanisms. As we transit into the highly anticipated moment of the day, the result declaration, we kindly request the dignitaries to please come forward for the prize distribution ceremony. We humbly request our Head of Department, Professor Dr. Praveen Kumar Gupta, to announce the winners of MAIMS 4th Justice J.S. Verma Memorial National ADRCC Competitions and Nevada's National Law Fest 2024. A very warm welcome to the august audience, our esteemed dignitaries on the dais and off the dais, students, participants. With blessings of Goddess Ma Saraswati, I am given this honorable duty to announce results of the 7 days long competition. This competition comprised of two main components, ADRCC competitions of 4 types and Navitas the Law Fest, 12 types of events. So participants, please be ready. अपने दिल की धड़कनों को संभाल के रखिए. So first of all, mediation competition. There are 6 categories in this event. Awards are of 6 categories. First award is Best Mediating Pair. That goes to Team MD09. Government Law College, Mumbai. Congratulations, Ahuja Pawar and Dhanvi. Please come forward fast. Next category, runner-up mediating pair, Team MD 17. Institute of Legal Studies, Punjab University, Chandigarh. Next, best team, team number MD21, Ram Manohar Lohia, National Law University. Team members are, I think, not present. Next is runner-up mediator, MD19, Vivekanand Institute of Professional Studies, Delhi. Yes, please move fast. And the last and 6th category in this mediation is Best Mediation Plan, MD36, NMIMS
I'm told that this participant is not present here. So, awards in this categories are over. Next is negotiation. Winning negotiation team. That team is team number NG2, University School of Law and Legal Studies, GGS IPU, Delhi. Next is runner-up negotiation team, team number NG18, Vivekananda Institute of Professional Studies, Delhi. Next is Best Negotiation Plan, Team NG2, University School of Law and Legal Studies, GGS IPU, Delhi. Congratulations. Next category is in arbitration. Best Team AB05, Lloyd Law College. Congratulations. Runner-up team of arbitration, this award goes to Team AB09, Jindal Global Law School. After that, in arbitration, Best Memorial, team called AB06, Christ University, Bangalore. But I am told this participant is not here. Next competition is in client counseling. There are 4 categories of awards in this. Best Team CC08, OP Jindal Global University. Runner-up team CC28, Asian Law College. Best client CC09, best client MAIMS, best advocate CC20, again OP Jindal Global University. In mediator category, there remains one more, Best Mediator, MD17, University Institute of Legal Studies, Punjab University, Chandigarh. Best Client, CC09. Best Mediator. Next, extemporary moot court competition. Best Team award goes to TC05, School of Law, Christ, deemed to be University. I think the team is not here. So, runner-up team award goes to TC07, Symbiosis Law School, Noida. Best Speaker 1, TC15, Rituraj Dharavan, MET University, Noida. Best Speaker TC15, extempore moot court.
Okay. Now ADR CC awards are over. Now Navitas awards. First one is judgment writing. And winner is JW75, UILS Punjab University. Next is runner-up of judgment writing, team JW144, Amity University, Noida. Constitutional quiz competition, winner is CQ58, National Law University. Runner-up UP CQ13, Vivekananda Institute of Professional Studies. Next is creative writing competition. Winner CW02, Banasthali Vidyapith. Runner-up team CW05, GLA University. Next award, article writing. Winner team is AW18, MAIMS, MAIMS. Congratulations team. It's our own institution, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. Runner-up of article writing, AW06, Lovely Professional University. Next is MI Picasso Digital Poster Making Competition. Winner-up team AIP 31, University of Lucknow. Runner-up team AIP 23, IGNOU, Indira Gandhi National Open University. Next is Folklore Traditional Dance Competition. Solo category, Folklore Traditional Dance, solo category. Winner is FL09, Ramanujan College. Welcome, congratulations. Yes, please come fast. Team FL09, Ramanujan College. Runner-up team of solo category, FL07, Kirti Nitya Niketan. Now group category of traditional dance. Winner is FL12, Zakir Hussain College. Congratulations. Runner-up team, please be ready, FL02, Lady Sri Ram College. Yes, please move fast. After that, Footloose Western Dance Competition. First is solo category. Winner team is FO28, Nritya Shala Dance Academy. Well done team. Then runner-up in solo category, FO22, IMS Unison Dehradun. Congratulations. Now group category of Footloose Western Dance Competition. Winner award goes to FO19, Gargi College. Yes, Gargi College, come fast. Runner-up FO25. Runner-up FO25, Lady Sri Ram College, DU. After Footloose, it's time for Harmony Solo Singing Competition. Winner award goes to HR35 MAIMS. Congratulations, MAIMS team. And runner-up in Harmony
HR 32 Satyavati College. After Harmony, Mike Mastrios Open Mic Competition, and winner team is MM30 Lady Sriram College for Women. And runner-up team of Mike Maestro is MM22 Netaji Subhas University of Technology. After Mike Maestros, it's time to announce Glamour Skew, the fashion show competition that everyone enjoyed yesterday. Winner team is G11 Vardhaman Mahavir Medical College. Yes, come fast, please. Runner-up G07 Sri Aurobindo College. I think they are not present. Best model female GA08 Maitreyi College. Best model male GA07 Sri Aurobindo College. Best walk female G05 Shivaji College. Congratulations. Best walk male G10 MAIMS. Best dressed female G2 Dayal Singh College. Best dressed. So I humbly request all the dignitaries to please take your seats. Group photographer. अच्छा, ठीक है. Announce. So it's done. Please. Thank you. Thank you, everyone. Now we request all the student team members of MAIMS, Fourth Justice J.S. Verma, Memorial National, ADRCC, and Navida's Law Fest 2024 to please come to the stage for a group photograph. देना शुरू करो पोजीशन. सर्टिफिकेट्स कहाँ पे? नीचे बैठ जाओ कुछ लोग. Announcement for faculties quickly. Thank you so much, everyone. You can all please take your seats. Now we request the respective faculty members of this mega event to come for a photograph. इसके बाद बोल देना जब हो जाए. Thank you so much for your efforts and support. ये बोल देना.
Now we request the respective faculty members of this mega event to come for a photograph. उसके बाद परफॉर्मेंस का बोलूँगी बाद में, पहले ना सबको बैठने होंगे फिर परफॉर्मेंस को। क्लैपिंग करनी है क्या? Thank you so much, dignitaries and the team, for all your efforts and support. Now, to move the session ahead, for the book launch, we would request the dignitaries to please launch the book on Family Law 1. Now, to move the session ahead for the book launch, we would request the dignitaries to please launch the book on Family Law 1, authored by our Director, Madam Professor Dr. Rajni Malhotra Dhingra. This book presents the law in safeguarding the familial rights, ensures child welfare, and resolving family disputes by promoting fairness and order. Thank you so much, dignitaries. Before we draw curtains to this event, we would like to call upon our strongest guiding force and support system of each and every endeavor we take upon, our chairman mates, Shri Vineet Kumar Lohia sir, to present the vote of thanks. सभी को नमस्कार। भारत के 27वें मुख्य न्यायाधीश श्री J.S. वर्मा जी की स्मृति में आयोजित वैलेडिक्टरी समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह को महिमा मंडित करने वाले मुख्य अतिथि
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल जी व गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल जी के प्रति विशेष धन्यवाद और सारगर्वित कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपके आशीर्वचन हमारे लिए मार्गदर्शक एवं अनुकरणीय रहेंगे। मैट्स के संस्थापक एवं मुख्य सलाहकार परम आदरणीय डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को नमन करता हूँ तथा एनडीएमसी के इस सभागार में उपस्थित मैट्स के उन सभी साथियों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ जिनके प्रयासों से ये आयोजन सफल हो सका है। मैं नेशनल ADR और क्लाइंट काउंसलिंग प्रतियोगिता के सभी प्रतिस्पर्धी छात्रों तथा विजेताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस कार्यक्रम की प्राणवायु ऑफिसर डॉक्टर रजनी मल्होत्रा ढींगरा जी, डायरेक्टर मेम्स तथा मेम्स के अन्य सभी फैकल्टी के अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूँ जिनके दिशा निर्देशन में ये समारोह सफल हो सका। और अंत में इस सभागार में उपस्थित सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ जिनके सामूहिक प्रयास का प्रतिफल इस समारोह की सार्थक व मार्गदर्शक परिणति है। मैं श्री JS वर्मा जी के कृतित्व व व्यक्तित्व एवं न्यायिक व्यवस्था में अनेक मानदंड और कीर्तिमान स्थापित करने वाले क्रिमिनल लॉ, RTI एक्ट, कानून के समक्ष सबकी समानता, महिला अधिकारों की लड़ाई और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने, माननीय न्यायमूर्तियों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम सिस्टम की स्थापना करने वाले, न्याय शास्त्र के अनेकों अनछुए पहलुओं की व्याख्या अपने निर्णयों में करने वाले न्याय के वटवृक्ष को शुद्ध अंतरात्मा से नमन एवं वंदन करता हूँ। श्री JS वर्मा जी एक न्यायविद अथवा न्यायमूर्ति ही नहीं थे बल्कि एक चलती फिरती संस्था थे जिन्होंने न जाने कितने लोगों को न्यायिक विश्लेषण के द्वारा सोच प्रदान की और क्वालिटी जजमेंट उद्घोषित किए जाने की प्रेरणा दी। श्री JS वर्मा जी की स्मृति में व्याख्यानमाला आयोजित करना, उनकी न्यायिक परिधि और पूर्णता से आज के युवकों और जिज्ञासुओं को परिचित करना अपने आप में एक पर्व के मनाने के समान है। श्री JS वर्मा जी आज हमारे मध्य नहीं है परंतु अपने सार्वकालिक उपयोगिता रखने वाले कालजयी निर्णयों से सदैव हमारे साथ रहेंगे और सभी के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। आज के इस समारोह को आयोजित करने वाले तथा इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाले समस्त विद्वजनों एवं सहयोगियों तथा जिज्ञासु छात्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा न्याय शिरोमणि न्यायमूर्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस समारोह को गौरवशाली बनाया तथा अपने उद्बोधन में से श्री JS वर्मा जी के विशाल व्यक्तित्व के से परिचय कराया और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस समय में एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि माननीय न्यायमूर्ति जो पंकज मित्तल जी द्वारा ये बताया गया कि अब हमारी न्यायिक प्रणाली में भी भारतीयता की आपको झलक देखने को मिलेगी, इससे बहुत उत्साहवर्धक हुए सब लोग और उसके लिए आप सभी लोग हम सभी लोग न्यायिक व्यवस्था के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये भारतीयता वाली न्यायिक जो व्यवस्था शुरू होने जा रही है उससे हम सब भारतवासियों को बहुत लाभ मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your kind and enlightening words. Thank you, sir, for always supporting us.
आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। Along the said lines, I request you all to take a moment to pay respect to our motherland and kindly rise for the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मरा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you everyone. We'd now like to request everyone to kindly proceed for the high tea and refreshments to first floor. And the participants, please stay back for a while. Thank you so much everyone for joining us today. Thank you. Yes, sir, we mentioned. And the refreshment for students is on the 2nd floor. The participants are requested to collect their trophies, certificates and checks and then proceed for the lunch. Thank you.